So Munhib Shah is a very person who likes these healthy books of, even I guess so, popular fiction, because his reading habits are really good, and he likes fantasy. He likes, I mean, his interests are in popular fiction, in religion, in all those works which even staticize myth as well. He writes poetry. He loves even Persian language and Arabic as well. And he's a poet in Urdu and in English, both languages. And presently, he is lecturer in Rifa International University, Islamabad, and he's doing his PhD from International Islamic University. So you can just welcome him. So, Munib, we welcome you on board. And now I would like you to just begin your thoughts. Munib will be discussing, let's see, maybe basically discussing about science, fantasy and myth, and how all those things have been encompassed in popular fiction. And then he would be ending his thoughts maybe with The Hobbit and more works that you should consult while developing your interest in popular fiction. Yes, Munib. Right. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's start. So, you guys, okay. So, tell me, have you guys started science fiction yet? Yeah, fantasy or any of those genres? So, yes, they have started with science fiction, and then they moved towards crime fiction, and nowadays they are working with fantasy fiction. Okay. So, that's wonderful. Take it. Okay. So, whenever you talk about science fiction, yeah, fantasy, popular fiction, as far as popular fiction is concerned, you can read it in any of the ways in which you read literature. So, any hardcore literature, जो आमतौर पे capital L के साथ लिखा जाता है and all that, right? So there is actually this entire debate about whether this division between popular fiction and literary fiction even exists, and I actually believe it doesn't. Magar, that's not our topic. So whenever we talk about fiction, science fiction and fantasy, so इसमें दो चीजें जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, two of the concepts that you've already encountered will be of use. The first is metaphor and the other is symbol. ठीक है ना? Metaphor, as you already know, is when you equate something with something else. ठीक है? And a specific form of it can be, for example, personification. इससे similar चीजें आपके पास metonymy आ जाती है, simile आ जाता है, and so on. A symbol is, technically speaking, in a way, a kind of metaphor, because you are saying something represents something else. Now, whenever we say science fiction या fantasy, तो उसके अंदर दो चीजें हैं, एक है वर्ल्ड बिल्डिंग और एक है सिंबल. वर्ल्ड बिल्डिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो ज्यादा क्रिएटिव राइटिंग में चला जाता है, और अभी हम क्रिएटिव राइटिंग के परस्पेक्टिव पे नहीं बात करें. आई मीन हम कर सकते हैं, मगर फॉर नाउ हम नहीं करें. तो मगर जो उसका वर्ल्ड बिल्डिंग है, उसी का ही लिंक उसके सिंबलिज्म से है. सो द थिंग अबाउट साइंस फिक्शन एंड अबाउट फैंटेसी इज कि दे डोंट हैव सिंबल्स इनसाइड देम, दे आर सिंबल्स. ठीक है ना? जिस तरह ख्वाब होता है ना, so this is why you can also study science fiction and fantasy using in the psychological approaches जो dreams को देखते हैं. और उसको समझने के लिए फिर अगेन आपको दो रास्ते आप ले सकते हैं. द फर्स्ट इज जो हमारा टिपिकल एक हमारे एकेडेमिया में लिटरेचर में है कि वी हैव थीरीज और उनकी फिलोसफीज है, एंड यू जस्ट पुट देम wherever you want to put them, and I mean nothing wrong with that. मगर another way to look at it is to look at the images that you have inside the text and then figure out कि ये जो दुनिया है इस नॉवल के अंदर, let's say लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अंदर, because I've been told आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ रहे हैं आजकल. सो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारी दुनिया के अंदर, राइट? एंड इट डजंट मीन कि ये करना जरूरी है. यू कैन ऑल्सो स्टडी इट एज एन इंडिपेंडेंट वर्ल्ड. आप ये भी देख सकते हैं इसके अंदर लोग क्या कर रहे हैं. मगर एट द एंड ऑफ द डे ऑल फॉर्म्स ऑफ राइटिंग आर इन अ वे पॉपुलेटेड बाय आवरसेल्व्स. यहाँ तक कि आप देखें कि जब भी हम स्टोरीज में एनिमल्स वगैरह को भी डालते हैं, वी गिव देम living characters, like we living personalities, we very much personify them या anthroposize them, right? हम उनको इंसान बना देते हैं एक तरह से. That's actually pretty interesting as well, from a psychological perspective. मगर अगर हम देखें कि instead of saying कि अच्छा फ्रॉइड ने ये कहा था सो इसलिए इस नॉवल के अंदर ये है, if we go by a more, let's say, Jung-ish approach, तो वो ये कहता है कि instead of कि आप ये कहें कि ख्वाब के अंदर ये चीजें होती हैं, इसका ये मायने होता है. What Jung used to do was he would take dreams in patterns. वो क्या बजाय कि एक ख्वाब लेके उसको इंटरप्रेट करे, वो कहता था कि आप अपने ख्वाब नोट करना शुरू कर दें.
और ओवर टाइम वो नोट करते करते उसमें से पैटर्न्स निकालता था, जो पैटर्न्स निकलते उनकी बेस पे वो फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करता था. So the other way is कि when you look at a piece of fantasy writing or science fiction writing, तो आप ये देखें कि इसकी equivalences क्या है as if it is a dream. इसके लिए हम एक टर्म यूज कर सकते हैं जिसको मेरी पोइट्री की टीचर कहती थी एक्सप्लोडेड मेटाफर. और अगर आपने थिएटर ऑफ द एब्सर्ड पढ़ा हुआ है तो एक क्रिटिक ने उधर का उसको टर्म दी है. क्योंकि मेरे जहन से टर्म निकल गया, उसने उसको मगर रिलेट किया था बेसिकली टेल्स से और किस्सों से, ठीक है ना. द आइडिया इज कि you have a story that is a story at one level, at the same time it's a separate world, and at the same time it is a symbol और an exploded metaphor. एक metaphor है जो एक जगह लोकेट होने की बजाय फैला के आपने पूरी स्टोरी पे फैला दिया है, ठीक है ना. सो द होल स्टोरी इज एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट एंड एट द सेम टाइम इट इज अ मेटाफर ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है. अब साइंस फिक्शन और फैंटेसी में डिफरेंशिएट कैसे होता है? साइंस इन फैंटेसी what you have is a world that symbolizes something else. It's an exploded metaphor, right? In science fiction, you have an exploded metaphor which is supposed to sound like science. So इस चीज के अंदर फर्क ज़हन में रखें. I'm not saying it is science. I'm saying it sounds like science. ये this distinction is actually pretty important, ठीक है. इसके लिए अगर आप ऐसे पढ़ना चाहें, एक छोटी सी किताब फिलहाल आपके लिए बहुत होगी, साइंस फिक्शन उसका नाम है, आई थिंक एडम रॉबर्ट्स ने लिखी है, सेकंड एडिशन रूटलेज ने छापा था, ठीक है ना. उसके अंदर वो डिस्कस करता है द वेरियस सीरीज ऑफ व्हाट साइंस फिक्शन इज, एंड डार्को सुवीन ने उसमें जो आइडिया दिया है वो आपका बेसिस बनता है. डार्को सुवीन सेट के साइंस फिक्शन में नोवम होता है, नोवा होता है, एंड व्हाट दैट बेसिकली मीन्स इज अ फैंटेसी वर्ल्ड that is explained by a means that sounds logical and scientific, चाहे एक्चुअली हो या ना हो. इसलिए आप देखेंगे मिसाल के तौर पे ऑर्सन स्कॉट कार्ड का जो एंडर्स गेम सीरीज है उसके चौथे नॉवल में चिल्ड्रन ऑफ द माइंड में ही सेंड्स देम इन अ शिप दैट गोज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट एंड देन a whole lot of weird stuff happens, ठीक है ना. But none of that is actually scientific, मगर it sounds scientific जिस तरह से वो उसको explain करता है, right? Another example you can take is the movie um, Reign of Fire, ठीक है ना. So Reign of Fire is a dragon movie, right? You have dragons in there. मगर that is science fiction unlike other dragon movies. So the difference is when you have a movie with dragons, which is fantasy, you just have dragons, ठीक है ना. Get used to it, ये हमारी दुनिया है, इसमें dragons होते हैं. But when you have a science fiction movie that uses dragons, then it's more like अच्छा dragons को आप explain करेंगे कि वो कैसे exist करते हैं. So he comes up with this entire story of how कोई species है which goes into hibernation for like eons and then it comes back और इस तरह करके he has this entire explanation for it. It's actually a pretty good movie, minus the part where nobody knows कि वो उनके पास बिजली कैसे रहती है when everything goes downhill, मगर it's actually a pretty good movie, ठीक है ना. So yeah, so when you have dragons, for example, this ये हम symbol ले रहे हैं for an example, the symbol of the dragon in a fantasy novel would just be there. You just have to understand कि उस दुनिया में dragons हैं. In a science fiction text, the symbol of the dragon will be explained as if it makes sense कि हमारी दुनिया में भी dragon आ सकता है, right? So that's the major difference. मगर whenever you are analyzing any of these genres, आप symbols को और dreams को अंदर ला सकते हैं. आप और भी रास्ते ला सकते हैं, मगर यह है कि मैं हूँ और उधर एफसी में मेरा एक दोस्त है सऊद, नुमान उनको भी जानता है. सो हम दोनों कुछ अरसे से साइंस फिक्शन और फैंटेसी को ड्रीम्स के उससे देख रहे थे और सिंबल्स के उससे. सो लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू गो विद दिस क्योंकि इस वक्त मेरे दिमाग पे ही चढ़ा है, ठीक है ना. सो या वी हैव सिंबल्स that are exploded all over the place, right? So you can then take the novel itself and you can read the novel as if it's a dream. By the way, for step one, always make sure to enjoy the novel. If you don't enjoy novels or again, the point is in that case you can't really understand the writing process us tarah se as compared to someone who actually enjoys the art, right? And if we're trying to understand art, then we need to also be able to, क्योंकि उसका प्राइमरी पर्पस जो है वो इट इज टू अपील टू योर एस्थेटिक सेंस. सो इफ यू कांट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत खोखली हो जाती है, राइट. सो यू वांट टू first enjoy it, then you might want to think about okay इसमें और क्या है, ठीक है ना. Now for example let's take the Lord of the Ring, ठीक है ना, the Lord of the Rings. The Hobbit जो उसका prequel है which was originally पहले लिखा गया था फिर उसको modify किया गया था after the Lord of the Rings was written, ठीक है ना. अब Hobbit जो है वो सिंबल से एक तो भरी भी है,
पर एट द सेम टाइम उसमें सिंबल्स कुछ ऐसे हैं जो पूरी दुनिया एक सिंबल बन जाती है, ठीक है ना। और अगर आप उन सिंबल्स पे ना भी जाएं तो अब सिंबल्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर आप सिंपली सिमिलैरिटीज चीज़ों में नोट करना शुरू कर दें आपको सिंबल्स मिल जाएंगे। अब उसके अंदर आपने सिंबल जब हम नोटिस करते हैं इस टाइप की सिचुएशन में, जब द होल वर्ल्ड इज अ सिंबल, तो हम दो चीजें करते हैं। पहली चीज हम पर्टिकुलैरिटीज खत्म करते हैं और दूसरा हम सिमिलैरिटीज को फोकस में लाते हैं, ठीक है ना। दिस इज काइंड ऑफ लाइक जब नीचे ने डिस्कस किया था कि हम कैसे कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, तो उसने कहा था कि यू हैव अ बंच ऑफ डिफरेंट लीव्स, मिसाल के तौर पे अगर ढेर सारे पत्ते हैं, ठीक है, यू हैव अ बंच ऑफ डिफरेंट लीव्स, एंड बाय नोटिसिंग उनमें सिमिलर क्या है एंड रिमूविंग उनमें डिफरेंट जो है, यू गेट द कॉन्सेप्ट लीफ। एंड ही वाज ट्राइंग टू आर्ग्यू कि लीफ एग्जिस्ट नहीं करता, लीव्स एग्जिस्ट करते हैं। हम एक सिमिलर चीज कर रहे हैं एक्सेप्ट विद कैरेक्टर्स एंड इमेजेस। हम ये करेंगे कि जो इमेजेस सिमिलर हैं हम उनको फोकस में ले आएंगे, और जो डिफरेंट हैं उनको बैकग्राउंड में ले आएंगे, एंड दैट्स व्हेन वी विल फिगर आउट कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, और इनमें सिंबॉलिक क्या है। सो मिसाल के तौर पे जो ड्वार्फ्स हैं और जो ड्रैगन है, इनमें सबसे पहली सिमिलैरिटी तो यह है कि वो एक ही जगह पे हैं, ऑब्वियसली राइट, द जो ड्वार्फ किंगडम है। मगर अब सेकंड सिमिलैरिटी क्या है, दे बोथ लाइक गोल्ड, ठीक है। बाय द वे कुछ सिमिलैरिटी सिर्फ सिमिलैरिटीज होती हैं, बट आपको जब नजर आने शुरू हो जाए देन यू फॉलो देम अंटिल यू फिगर आउट कि ये इत्तेफाक है या एक्चुअल कुछ है यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं अब सिमिलर इसमें क्या नोट, इसमें डिफरेंस क्या है और सिमिलर क्या है। सिमिलर ये है ड्वार्फ्स के पास सारा गोल्ड है, ठीक है, और ड्रैगन के पास सारा गोल्ड है। अच्छा, डिफरेंट ये है कि ड्वार्फ्स जो है वो गोल्ड को प्रोड्यूस करते हैं और उसको सबके साथ शेयर करते हैं और प्रॉस्पेरिटी है। मगर ड्रैगन जो है ही टेक्स ऑल द गोल्ड, स्लीप्स ऑन इट, लिटरली उस पे लेट के सो जाता है, एंड किल्स एनीवन हु ट्राइज टू गेट नियर इट, सो इसलिए नो वन इज प्रॉस्परिंग, ठीक है। अब इसको हमने फिलहाल तो डिफरेंट लग रहे हैं, मगर इसमें भी एक चीज नोट करें, एक और सिमिलैरिटी ये है कि द टाइम व्हेन द ड्रैगन कम्स इज व्हेन द dwarves स्टॉप शेयरिंग, ठीक है। सो द टाइम व्हेन द ड्रैगन कम्स इज व्हेन द dwarves स्टॉप शेयरिंग, और जब ड्रैगन चला जाता है तो उसके बाद भी द dwarves आर नॉट शेयरिंग, एसेंशियली द सेम थिंग इज हैपनिंग, दैट द ड्रैगन they're doing the same thing that the dragon was doing, ना शेयर करते हैं, लोगों का बुरा हाल हो रहा होता है, people come to them for help, they don't give them any money, ठीक है ना। they're doing the same thing that the dragon does, except they're doing the same thing that the dragon is doing, बस difference ये है कि अब dragon की जगह dwarves है हमारे पास। So this suggests a connection, ठीक है ना। तो हमने पहले similarities नोट किए हैं स्टेप 1 में, स्टेप 2 में हमने differences नोट किए हैं, फिर हम देखे कि कनेक्शन है कि नहीं। कनेक्शन क्या है कि जब तक dwarves शेयर कर रहे थे तब तक dragon नहीं था, जब dragon आया तो dwarves जो हैं उन्होंने शेयर करना छोड़ दिया था। जब dragon को ने रिमूव किया, they're still not sharing, and when they start sharing again फिर prosperity वापस आ जाती है। So this is what we mean by an exploded metaphor. What we mean by an exploded metaphor is कि it's a symbol या metaphor, मगर सिर्फ एक image नहीं है, वो पूरी story भी itself symbol है। Symbol कैसे है कि the dragon in a way is a separate character, but in a way it is also the dwarfs themselves. क्यों? क्योंकि they are the same thing, they are both the people with the gold. The difference is कि dwarves अपने हाइट में वो हैं, दे रिप्रेजेंट द साइड जब आप शेयरिंग कर सकते हैं, एंड द ड्रैगन रिप्रेजेंट द साइड जब आप उसको अपने पास खींच के रख रहे हैं उसी गोल्ड को, ठीक है ना। सो इट्स वी फाइंड द सेम थिंग बट वी फाइंड अ लिटिल डिफरेंस, एंड दैट टेल्स अस के स्टोरी के अंदर ये सिंबल कैसे वर्क कर रहा है। सो इट्स लाइक द ड्रैगन इज सिंबलाइजिंग वन एस्पेक्ट ऑफ द dwarves जिसको उन्होंने कमजोर रखना है, ठीक है ना। एंड दिस इज व्हाई आल्सो मूवी के अंदर दे डिड दिस मजे की चीज, जहाँ पे बाद में फॉरेन व्हेन ही इज वॉकिंग इन द हॉल ही एक्चुअली सीज जमीन के अंदर वही ड्रैगन चलते हुए, राइट, जो सोने की जमीन बनी हुई होती है। सो वी हैव वन इमेज। इसी तरह अब आप देख लें उसको, गॉलम को अगर आप देख लें, गॉलम और जो मेन हमारा गाय है बिल्बो, राइट। सो बिल्बो और गॉलम में कॉमन क्या है, दे बोथ हैव द रिंग, ठीक है। अब अब हमने ये देखने की क्या ये सिमिलर है ये डिफरेंट है। वेल अगर हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को भी अंदर ले आए तो वी विल सी कि गॉलम जो है ओरिजिनली ही इज अ नॉर्मल पर्सन एंड ही हैज द रिंग एंड ही यूजेस इट बेसिकली अपने बेनिफिट के लिए, एंड इट करप्ट्स हिम ओवर टाइम। और हम बाद में देखते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में कि इट स्टार्ट्स टू करप्ट बिल्बो एज वेल, राइट।
फिर इसके अलावा हम ये भी नोट करते हैं कि द रिंग इज डिस्क्राइब्ड एज इफ वो खुद डिसीजंस ले रही है कि कहाँ जाना है उसने और कहाँ उसने नहीं जाना। बाय द वे आपको हॉबिट में मिलेगा, जब रिंग बिल्बो के पास आएगी, यू विल सी थिंग्स लाइक के रिंग, द रिंग स्लाइड्स ऑन हिज फिंगर, या एंड सो ऑन, ठीक है ना। एंड सो यहाँ पर हमें क्या नजर आता है, अब अगेन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सिमिलैरिटी मेन ये है कि दे बोथ हैव द रिंग एंड द रिंग डज हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन देम, ठीक है। अब फिलहाल हम हॉबिट में रहते हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में आएंगे तो एक सिंबल और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इसके मायने बदल जाएंगे। मगर फिलहाल हॉबिट में अगर हम रहें तो Gollum uses the ring for himself against other people. He tries to kill Bilbo, basically to eat him and others. He has already eaten others. He has, right? And Bilbo uses it basically to help his friends. So in a way, possibly, फिलहाल क्योंकि अभी हम सिर्फ हॉबिट तक रह रहे हैं, मैंने जैसा बताया है कि to analyze the ring you actually have to also look at the Lord of the Rings, मगर if we stick to the Hobbit itself, it might suggest कि the ring represents power because it is the ring of power. It makes you invisible, it gives you some kind of ability, but with it you get the possibility of using it in a way that is corrupting or in a way that is not corrupting, and then this symbol runs through the entire story and it makes the story work, right? फिर एक और इसमें जो सबसे बड़ा सिंबल इसके अंदर है, दैट इज द सिंबल ऑफ द हीरोज जर्नी। द हीरोज जर्नी इज इटसेल्फ अ सिंबल, और इस पे काफी काम हुआ हुआ है। द वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्जन्स ऑफ दिस वाज बाय जोसेफ कैम्पबेल इन अ बुक कॉल्ड द हीरो विद 1,000 फेसेस, ठीक है ना। सो दैट वर्जन हैज द जर्नी ऑफ द हीरो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। इसके और भी वर्जन्स हैं जो आई मीन अगर आप में से कोई बाद में सिंबल्स ऑफ हीरोइज्म इन लिटरेचर में काम करना चाहे वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो उसके अंदर क्या होता है, द आइडिया इज के द जर्नी इटसेल्फ, और आप बिल्बो की अगर आप जर्नी को देखें उसके अंदर वो सारे स्टेजेस आपको मिलेंगे। सो इफ वन एनी ऑफ यू वांट्स टू डू दैट लेटर ऑन, आप ये कंपैरिजन भी कर सकते हैं, आपको मजा आएगा काफी, ठीक है ना। सो व्हाट यू कैन डू देयर इज कि आप तो देखें कि जो स्टेजेस हैं उस जर्नी की वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एंड फॉर द मोस्ट पार्ट दे यूजुअली रिप्रेजेंट वन ऑफ मेनी थिंग्स। बिल्बो के केस में इट रिप्रेजेंट्स the two families that he is a part of. He's part Took, he is part Baggins. जो Baggins हैं, they are described as being basically boring, right? They just stay at home and eat a lot. और Tooks जो हैं, they go on adventures. And the interesting thing is कि Bilbo के अंदर we have both sides, and it is basically a story. The story itself, यहाँ पर अब symbol क्या है? The story is symbolically a battle between his Took blood and his Baggins blood, ठीक है ना। उसका जो Baggins blood है, that represents resistance to trying something different and new, और जो Took blood है, that represents trying something new, basically the impulse to try something new. And the idea is कि without the Took blood, basically you cannot find out what you are. On the one hand, you cannot figure out you cannot try new things if the old fails, right? And but at the same time, without the Baggins blood, you would basically have no moorings, or you would just be wandering around all the time. So what Bilbo needs is both of them. He needs the Took blood to go with Gandalf, and he needs Gandalf to push him basically, but he needs the Baggins blood to eventually come back, ताकि वो आके जो उसने सीखा है from that journey, he can also give that back to the people who are at home, ठीक है ना। So Hobbit के ये 3 बड़े symbols हैं, और भी काफी सारे symbols हैं, like वो जो ह्यूमन विलेज है उसमें सिंबल्स हैं, जो एल्व्स की 2 विलेजेस हैं, उन दोनों एल्व्स की विलेजेस एक अलग चीज रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना। बट वो अब आपने खुद ही फिगर आउट करना है, राइट। बट द थिंग इज नॉट कि ये एक स्टोरी में है। फैंटेसी और साइंस फिक्शन में जितने भी अच्छे काम लिखे हैं, ऑल ऑफ देम आर सिंबल्स फॉर द मोस्ट पार्ट। आप आर्थर सी क्लार्क पढ़ लें साइंस फिक्शन में, आइजैक एसिमोव पढ़ लें आप, ये क्लासिक्स हैं। आप बाद में ऑर्सन स्कॉट कार्ड को उठा के पढ़ लें, ठीक है ना। ऑर्सन स्कॉट कार्ड के एंडर्स गेम इन अ वे मिलिट्री को भी सिंबलाइज करती है, मगर एट द सेम टाइम वो हेजेमनी को सिंबलाइज करती है और स्कूल्स को भी सिंबलाइज करती है। सो वेरी फन स्टफ। दूसरी तरफ मगर अगर आप देखें फैंटेसी के अंदर, सो आपके पास आ जाते हैं टेक्स्ट जिस तरह द व्हील ऑफ टाइम। बाय द वे, द व्हील ऑफ टाइम के इज अ रिडिकुलसली ह्यूज सीरीज, उसके अंदर आई थिंक 14 नॉवेल्स हैं, मगर you might be interested in trying it out. It's one of the very good series, ठीक है ना। I consider it better than Game of Thrones personally, but I mean बाकी आपकी मर्जी। uh, yeah,
इसके अलावा you can find other fields in science fiction and fantasy जिसमें आपको और different किस्म के symbols मिल जाएंगे. So मिसाल के तौर पे ये theological science fiction कह सकते हैं. What it brings in is not just that you use something, bring in an explanation that sounds scientific, you bring in an explanation that sounds theological. यानी एक किसी theological text को आप अंदर involve कर लेते हैं. So, and it doesn't have to align perfectly with that theological text. ठीक है ना? अगर मैं इसको Islamic science fiction कहूँ, then it has to align with it. मगर when I say Islamicate science fiction, then it doesn't have to align with it. It just has to be inspired by the symbols that come from that civilization. ठीक है ना? ठीक है ना? So that is basically how science fiction works. That is how fantasy works, and that is how इनकी जितनी भी offshoots हैं, they work. ठीक है ना? And as far as how to study these is concerned, इसमें you can take like 3 approaches. Well, आप और भी ढूंढ सकते हैं, मगर like 3 जो आप for starters रख सकते हैं अपने ज़हन में. The first is जो सबसे आसान है, like कोई एक थ्योरी पकड़ लें, जिस तरह से हमारे यहाँ रवाज है आजकल, और बस उसको फेंक दें ऊपर टेक्स्ट के एंड आपको सिंबल खुद ही मिल जाएगा. I mean, नुमान को पता है आई एम really against this kind of approach, मगर चले. The second approach is जो यूंगियन मैंने आपको बताई थी, which is कि you look at the symbols, जो भी हमने किया था Hobbit के साथ. You take the symbols, you take the images, you look at them in comparison with each other, and you notice patterns, और उन patterns के अंदर से आपको खुद ये symbols मिलना शुरू हो जाएंगे, and you won't really need to go to spark notes after that, right? At some point you outgrow spark notes, आपको ज़्यादा अच्छे ideas मिल रहे होते हैं. And the third approach is slightly different, which जो आपको ज़्यादा research के time पे काम आएगी, which is कि you don't just look at the symbols that आपको इस तरह से comparison से मिल रहे हैं, but you also look at the symbols that are operative in the society or the kind of books that the author is engaging in. So मिसाल के तौर पे fantasy fiction में हमें पता है कि बहुत सारी पुराने symbols अक्सर evoke किए जाते हैं, और खासकर religion के भी बहुत से किए जाते हैं. So there is a book called Ancient Symbology in Fantasy Literature. You might want to look that up. ठीक है ना? So उसके अंदर वो क्या करते हैं कि so the third approach is कि you also go into the kinds of symbols that these guys are evoking, so you know those symbols, and then from that perspective आप approach 2 की तरफ फिर आप उसके साथ आते हैं. So you don't just jump to approach 2, you take the long route, you also at the same time develop background knowledge, and then you come to approach 2. ठीक है ना? And then of course और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मगर इस सारे के अंदर जो सबसे important चीज़ है जिस पे मैं वापस अभी आऊँगा, and then I guess हम जल्दी एंड कर लेते हैं, like बहुत लंबा बोलने का की हमें ज़रूरत नहीं है. मगर सबसे important 3 चीज़ें यहाँ पे फिर भी रहती हैं. The first is read the text and enjoy it. ठीक है ना? Don't just read it कि आपकी क्लास में आ गया था. ठीक है ना? The second is when you are looking for symbols, find symbols at a personal level, क्योंकि वो आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा उसमें. And the third is, especially if you're interested in writing, इसमें और बहुत सी advice आ सकती है, मगर for now let's just say notice कि writer अपने symbols को कैसे use कर रहा है और उनसे कैसे खेल रहा है. It will give you ideas to experiment with, and of course at the end of the day आपको कौन से किस तरह का symbolism आपके लिए चलता है, या आपने उतना thick symbolism use करना है या नहीं करना, that will be your own decision, right? So yeah, I think that's enough. Numan? Yes, that's good. So first, thank you so much for this wonderful talk, because you have, spanned over most of the areas of science fiction and fantasy fiction, and then the way you described the Hobbit, and especially that exploded metaphor, it will help them a lot in tracing, the roots By of the way, what's ये जो explored metaphor की चीज़ है, you can apply it to the theater of the absurd as well. एक exactly किताब I was thinking या of. एक किताब है Reassessing the Theater of the Absurd, which says कि basically एस्लिन ने जो एनालिसिस किया था वो ठीक नहीं है. एस्लिन ने कहा था ना कि Theater of the Absurd is all about anguish and pain and all that, right? उसने कहा था कि नहीं, Yes. actually ये सारे metaphors हैं और इनको उस तरह से देखना चाहिए. So Sure. I would circle back to you on this. I mean, after this session, I would get some books from you. So, do you have any question? Because if you have started reading The Hobbit, then I'm sure you would have some questions in your mind, or if you have some questions relevant to the works you have studied before, or from the things that he has discussed today. Yes. Okay, then we would like to ask you that how Munhib has conceptualized that idea of exploded metaphor.
Because the author and the creator who is just playing with the symbols and the revealing in the text. So in that sense, exploded metaphors like in that sense. Hmm. So, yeah, when we were discussing about it, especially like fantasy and science fiction things, so I was telling them that, even fantasy, there are different uh, ways, they create the worlds. Like sometimes they create a primary world and then there is a secondary world, and sometimes they create the parallel worlds there. What about the Hobbit? What kind of world you see there? Is it like they create both worlds together, like in the same world, or there is a world and there is an underground world there? Okay, so Hobbit में there are three words, and इसको समझने के लिए, by the way, it would be very interesting as well. J.R.R. Tolkien, ये नाम था ना? Yes, J.R.R. Tolkien, Tolkien, या Tolkien, yeah, Tolkien. J.R.R. नहीं, J.R.R. ही था ना? मैंने पीछे पता नहीं क्या Yes, लिखा था। J.R.R. Tolkien. राइट, आई होप मैंने उसका नाम नहीं बिगाड़ा, बट J.R.R. Tolkien वाज अ कैथोलिक बेसिकली, और उसने इसमें बहुत सारा रिलीजियस सिंबलिज्म भी डाला है। वी डिडंट गो इनटू दैट बिकॉज वो फिर और कॉम्प्लेक्स बात होती जाती है। फिलहाल द फर्स्ट स्टेप इज कि आप खुद सिंबल्स नोट करना शुरू करते हैं, देन यू कैन स्टार्ट रिलेटिंग देम टू द सिंबल्स जो राइटर खुद लाइक एक्सप्रेस करता था एज वेल। सो इसके अंदर तीन दुनियाएं हैं, राइट? देयर इज साउरॉन की जो जगह है, राइट, क्या नाम था उसका? कुछ नाम था उसका, छोड़ो जो भी नाम था उसका, ठीक है ठीक है. ना? या देन देयर इज मिडिल अर्थ जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स हैं, That's a middle world, right? राइट? और फिर आखिर में वो जगह है जहाँ पर से एल्व्स आए थे और सारे एल्व्स चले जाते हैं आखिर में, I see. राइट? And the dwarves live in the middle world, right? या ड्वार्व्स भी मिडिल अर्थ में है, हॉबिट्स भी मिडिल अर्थ में है, लाइक ऑल ऑफ द स्टफ इज हैपनिंग इन मिडिल अर्थ। एल्व्स जो हैं वो कहीं एक और जगह है, वहां से यहाँ आए हैं, और फिर साउरॉन की जगह है जो लाइक कनेक्टेड है, इट्स लाइक लिटरली ऑन द सेम प्लैनेट, मगर इसके अंदर इन द नॉवल, बट दे आर थ्री रेल्म्स इन अ वे, या आप कहते हैं थ्री प्लेसेस आप कहते हैं, ठीक है ना? और जो साउरॉन वाली जगह है, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय dark characters, dark themes, like even the color of the place is dark and cursed, right? जो एल्व्स वाली जगह, it's kind of higher than the Middle Earth, and Middle Earth जो है, that is, the entire mix of stuff that we know in our world, right? So in a way उसके अंदर यहाँ से इसको भी आप as symbols फिर ले सकते हैं, क्योंकि तीनों दुनियाएं एक चीज represent कुछ कर रही हैं, and then they work together to make, I'm Well, back. yes. So, Munib, we got a person who wanted to ask question, and just first introduce yourself and then सर हमें जो है ना फैंटेसी पढ़ा है, मतलब जिस तरह साइंस फिक्शन पढ़ा है, इसी तरह डिटेक्टिव क्राइम हमें जो है ना सर फिक्शन है, लेकिन इसके जो है ना रियल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है? क्या So, impact? yes, he's asking about the impact of science fiction or the popular fiction in real life. ओके, इसको हम चार पांच एंगल से आंसर कर सकते हैं। द फर्स्ट इज के डज फिक्शन हैव टू इम्पैक्ट लाइफ? लाइक ये फैसला किसने किया था कि फिक्शन का कोई एक चीज ध्यान में रखें। हम अक्सर जो लिटरेरी फिक्शन की भी बात कर रहे होते हैं ना, कि इस राइटर ने इसलिए लिखा था, इसलिए लिखा था, राइटर ने अक्सर उसलिए नहीं लिखा होता। ये हम अपनी तरफ से ना, हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है क्लासरूम में कहना, हम कह रहे होते हैं। सो ये दिस इज माई फर्स्ट, मगर मैं दूसरा रिस्पॉन्स भी दूंगा, मगर लाइक ये एक चीज मैं फोरग्राउंड कराना चाह रहा हूँ। एंड इनफैक्ट देर इज अ बुक, राइटिंग पाकिस्तान, नुमान को शायद पता होगा। राइटिंग पाकिस्तान बिलाल मुश्ताक ने लिखी थी, जिसमें उसने ढेर सारे पाकिस्तानी जो लिटरेचर इन इंग्लिश के ऑथर्स हैं उनके इंटरव्यूज लिए थे। एंड एवरी टाइम ही आस्क्ड एनी वन ऑफ देम कि आप इसमें क्या सोच के लिखा था आपने, आप क्यों लिख रहे थे, आप क्या करना चाह रहे थे? दे ऑलवेज रिस्पॉन्डेड विद समथिंग लाइक, आई वांटेड टू राइट अ गुड स्टोरी, ठीक है ना? अब थीम्स कहाँ से आती हैं लिटरेचर में? थीम्स राइटर जबरदस्ती प्लान करके कभी कभार डालता है, जैसे हरमन हेसे ने डाली थी, ठीक है ना, सिद्धार्था के अंदर, मगर बाज औक़ात उस तरह से नहीं डालता। जिस वक्त आप स्टोरी लिखते हैं उस वक्त थीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट इमेज और सीन होता है, राइटिंग के परस्पेक्टिव से। क्रिटिक के लिए थीम असल में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो उसका फोकस है, मगर राइटर का फोकस ये नहीं है। राइटर का फोकस ये है कि मैं कैसे ये कहानी सुनाऊं कि ये कहानी अच्छी तरह से सुनाई जाए, ठीक है ना? सो इसलिए हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि जब हम क्लासरूम में इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं उनमें, एंड एज कम्पेयर टू जब एक राइटर लिख रहा होता है। सो राइटर, सो the first thing is, because literature is not science, it does not necessarily have to do something for society.
मगर जहां तक बात है कि क्या करता है, तो दो तीन चीजें ध्यान में रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिटरेचर जो सबसे बड़ी चीज करता है, और वो सारा चाहे पॉपुलर हो या लिटरेरी हो, वो वो आपकी एम्पैथी को इवोक करता है, और इसमें हमारे पास स्टडीज मौजूद है कि उससे एम्पैथी आपकी बढ़ती है। एक और चीज जो लिटरेचर करता है, दैट इज कि वो आपके थॉट प्रोसेसेस को थोड़ा डिफरेंट तरह से फायर अप करता है, ठीक है ना। आप एक चीज नोट करें कि बहुत सारे जो मेजर थिंकर्स गुजरे हैं, या जैसा आइंस्टाइन है, दे ऑल लव्ड लिटरेचर एज वेल। उनमें से बहुत से लिखते भी थे, बहुत से पढ़ते थे, बहुत कुछ। बिकॉज द ह्यूमन माइंड इज नॉट लाइक अ मशीन, ठीक है ना। इंसान मशीन की तरह नहीं है कि आप उसको सिर्फ लॉजिक से और 0101 से पढ़ लें। उसकी भी अपनी जगह अहमियत है, मगर देर इज अ रीजन वी हैव आर्ट एंड लिटरेचर, दैट्स बिकॉज वी आवर माइंड्स हैव मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू देम, ठीक है ना। आप आप लोगों ने शायद अनकॉन्शियस वगैरह की थीरियां भी पढ़ी हों, या शायद अभी बाद में पढ़ेंगे। एंड द पॉइंट इज कि देयर इज मोर टू ह्यूमन लाइफ देन जस्ट द मटेरियल एस्पेक्ट। तो एक तो लिटरेचर उसको भी टारगेट करता है। तीसरा, जहां तक साइंस फिक्शन और फैंटेसी की बात है, अगर हमने इस पे आना ही हो कि उसका क्या फायदा है, because science fiction and fantasy are always set apart in a world that is similar to but different from the world we live in, it actually has more potential when it comes to criticizing things in a very different manner. आप लोगों ने गलिवर्स ट्रैवल्स पढ़ा? या सो गलिवर्स ट्रैवल्स में क्या करता है वो, लिलीपुट में जाके फिर उसे जो कुछ बुरा भला कहना था क्वीन एन को, और उसे जो बदले लेने थे वो ले लिए थे उसने, राइट। सो लाइक उसमें मिसाल के तौर पे जो फायर वाला सीन है, जब कासल पे आग लगती है, ठीक है ना, वो एक्चुअली गलिवर ने, सॉरी, जॉनथन स्विफ्ट ने क्वीन एन से डायरेक्ट बदला लिया था, इसलिए वो आग जब लगती है कासल में, तो ओनली द क्वीन रिमेन्स इनसाइड, ठीक है ना। एंड देन वो फिर जिस तरह से आग बुझाता है, उस तरह से आग बुझाता है, राइट। सो एक तो ये तो खैर थोड़ा ही वाज जस्ट बीइंग मीन, मगर एट द सेम टाइम, अब जिस तरह हॉबिट के अंदर आपने इस तरह से बात की है, बहुत से आपको फैंटेसी नॉवेल्स ऐसा मिलेंगे जिनमें आपको ये भी शायद नजर आएगा कि इनडायरेक्टली कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाई जा रही थी, या इनडायरेक्टली कोई चीज समझाई जा रही थी, या किसी चीज को बुरा भला कहा जा रहा था। सो कभी कभार लिटरेचर डायरेक्टली क्रिटिसाइज करता है, कभी कभार इनडायरेक्टली करता है, और एट टाइम्स इनडायरेक्टली ज्यादा स्ट्रांग होता है, और एट टाइम्स डायरेक्टली ज्यादा स्ट्रांग होता है। दूसरा उसके अंदर ये है कि इट ऑल्सो गिव्स यू द चांस टू एक्सप्लोर ह्यूमन सोसाइटी इन अ सोसाइटी दैट इज सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम योर्स, क्योंकि सिंबल्स जो हैं वो चीज़ों को काइंड ऑफ यूनिवर्सलाइज ज़्यादा करते हैं। तो उसका एक फ़ायदा मिसाल के तौर पे ये है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि, यानी यू कैन मेक वन कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक थिंग इन इटसेल्फ, सो इन अ वे इट कैन ऑल्सो बिकम अ फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन। इसलिए आप देखेंगे बहुत से फिलोसोफर्स ने, जैसा फैंटेसी में एक्सप्लोरेड मेटाफर्स हैं, उन्होंने एलेगरीज लिखी हैं, राइट। सो अरबी में देयर इज वन कॉल्ड हई इब्न यकदान, इब्न तुफैल वाज ए फिलोसोफर एंड ही रोट दैट, ठीक है ना। इंग्लिश में भी बहुत सी हैं, लैटिन में बहुत सारी हैं, राइट। प्लेटो की बहुत सी एलेगरीज हैं, छोटी छोटी, ठीक है ना। they tell this tiny story and that tiny story tells you a lot, right? So novels can become philosophical explorations, ठीक है। एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम बहुत से रीजंस दे सकते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे द मेन थिंग इज दैट वी जस्ट वांट टू टेल अ गुड स्टोरी एज वेल, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा था लिटरेचर में द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू रीड अ नॉवल इज यू एंजॉय द नॉवल। द नेक्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू रीड द नॉवल इज यू ट्राई टू फिगर आउट उसमें क्या है। एंड देन द थर्ड थिंग यू ट्राई टू डू इज कि ये वाइडर जगह पे कहाँ कनेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। सो द फर्स्ट थिंग इज, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन, लोग डिसएग्री करते हैं, बट इन माई ओपिनियन द फर्स्ट थिंग इज एंजॉइंग द टेक्स्ट। और अगर आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म अभी पढ़ा है, तो आपको फिलिप सिडनी की डेफिनेट की पोइट्री पे बहस याद होगी। उसने कहा था कि द पर्पस ऑफ पोइट्री इज टू टीच एंड टू डिलाइट, और उसने साथ में कहा था प्राइमरीली टू डिलाइट। सो बिकॉज आई एग्री विद दैट, आई थिंक प्राइमरीली इट इज टू डिलाइट। सो I would say कि we don't need fantasy to do anything or science fiction to do anything, मगर as far as it is यानी the question of what it does is concerned, it does a lot of stuff, ठीक है ना। I hope that helps. Yes, I mean, you have answered in a very detailed way, and hopefully you got the point. Puzzle? Yes. Yes, yes. Is there any other question? So I guess that they've understood, I have actually reserved some time, and that's good. We are ending at 4:23 because I have actually, reserved this moment so that they could reflect your thoughts actually on their papers over here, whatever understood from you, because that was very significant.
because the way you have captured all those things, I'm sure that they would be able to put that in one paragraph, and that I will be going to share with you the best one that they will produce. Okay. And also, earlier when they were working on, when we were studying Alice's Wandering Adventures Mhm. in Wonderland, sorry, yes, Alice's Adventures in Adventures in Wonderland. Wonderland, yes. So I asked them to reposition that Alice into different ways. Mhm. Some even change the gender, some put them into some war land, some borderland even, some switched even their whole, time and space, and even brought them in Pakistan, I guess so even. So I would also be sharing a few ones with you so that you could select a few best ones that we may give some certificates to those who have produced some good stories, right? And then we also have a magazine here in which we will be publishing a few good stories after your suggestions. So thank you so much once again, Munib. You have made our day because you have made, so much understanding about the Hobbit. Some of them might have not touched the surface of, they have not even landed the surface of the Hobbit. Hobbit to kahin middle world mein kahin reh raha hai na, but you have not even on the surface, but hopefully you would start reading it. तो अच्छे से आपको ये अब ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, because yeah, Munib has shared very, precisely all the things. So Munib, thank you once again, and we will be looking forward to you even in future as well. Inshallah.